बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर खिदमत हैं ब्रेक के बाद दोबारा। मैंने अपने कुलीग से एक सवाल किया था और बीच में एक कॉल आ गई और हमें उस मौजू को छोड़कर दूसरे मौजू की तरफ जाना पड़ गया। हमारा मौजू था वो वालिदैन जो कि डिपेंडेंट हैं और जो बच्चे या जो फैमिलीज़ अपने वालिदैन को वहाँ से बुलाना चाहते हैं उनके लिए कानून में क्या गुंजाइश है। तो उसमें मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये देखना पड़ेगा कि उन वालिदैन की किस किस्म की निगहदाश्त वहाँ पर हो रही है, उनकी केयर किस तरह से हो रही है उस मुल्क में जहाँ पर वो रह रहे हैं। इसके बाद दूसरा पहलू जो उन्होंने उजागर किया था वो ये था कि इसमें जो माशी पहलू हैं या इकनॉमिक पहलू हैं वो क्या हैं, यानी आप उनकी खिदमत में क्या पेश करते हैं, क्या उनको आप पैसे भेजते हैं यहाँ से और उसके क्या असरात आप पर मुरतब हो रहे हैं। इसके अलावा ये कि हमें ये देखना था कि उसमें यानी ऐसे वालिदैन की देखभाल करने के लिए वहाँ पर कौन है, क्या कोई और ऐसा अजीज़ वहाँ पर मौजूद है, करीबी अजीज़ मेरी मुराद है कि जो कि उनकी वहाँ पर देखभाल कर रहा है। और इसके बाद एक और पहलू था वो है कि आप उनकी जो खिदमत है वो किस तरह से कर रहे हैं या कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक पहलू जो था जिसे मैं चाह रहा था कि वजाहत की जाए, क्योंकि मेरे तजर्बे में ये चीज़ आई है कि लोग आकर मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं और मैं इसी सवाल को अपने साथी के सामने रख रहा हूँ। वो सवाल ये है कि लोग आकर हमसे ये सवाल करते हैं कि ये बताइए कि मसलन कोई एक कॉल आ गई है, इसके बाद फिर हम इसी मौजू को दोबारा शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। किबला कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी बिस्मिल्लाह, जी बोलिए। जी सवाल मेरा ये था कि बेसिकली जो टायर 4 स्टूडेंट्स हैं, जनरल स्टूडेंट्स, उनके हवाले से आप कुछ बता देंगे कि डॉक्यूमेंटेशंस जब वो अगर अपने फैमिली मेंबर यानी कि स्पाउस और बच्चों को बुलाना चाहें तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस पे थोड़ा सा आपका सवाल ये है कि टियर 4 जनरल स्टूडेंट्स के लिए अगर वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बिल्कुल यही सवाल आपका। ठीक है, आपके सवाल को इसका जवाब देंगे, लेकिन वो जो मैं पहले बात कर रहा था उसके बाद मैं आपके सवाल को जवाब दूंगा। चलिए, बहुत माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शो आपका जा रहा है माशाल्लाह हिदायत टीवी में। बहुत जज़ाकल्लाह। Yeah, Kudus, the question is, people come and ask me this question that, if some of the family member is not living with them, say for example, one of the daughter or one of the brother or sister, they are living in different cities, or there are some in their home country. In their home country, right? Or in some cases where there is a mother and the daughter is married. So in our culture, obviously, if someone is married, they live in their own houses, they don't live with the parents. So what sort of provision we have in the law in terms of this adult dependent relative, or there is no provision? You see, there is no provision really. It is a practical application by the Home Office caseworkers, depending on the case at hand. Sorry, we have a call here. Assalamu alaikum, कौन साहब कहाँ से? जी आतिफ बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। सवाल एक पूछना था। जी पूछिए सवाल। जी पूछिए सवाल। जी आतिफ बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी बोलिए जनाब। मेरा क्वेश्चन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के लिए, मैं अपने भांजे को बुलाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे? एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, तो आप यहाँ पर कैसे हैं खुद? जी मैं इटालियन नेशनल हूँ। इटालियन नेशनल हैं और आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को बुलाना चाहते हैं, ठीक है जी। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। शुक्रिया। या द क्वेश्चन व्हिच वी वर डिस्कसिंग। Yes. So about the adult dependent relative. So it's a practical application depending on the case at hand. So they would look at, obviously, it would be in the application we normally would explain and give the circumstances. If the other children based in the home country live far away, are involved in their own daily lives,
have their children and other things to take care of, and they cannot provide the care which the parent, for example, requires or needs, then in that case it should be presented the way it is, and then you should present arrangements made in the UK to take care of this adult dependent in the UK, which would require, you know, day-to-day care. So I think the answer to that question is present the practical circumstances clearly to the Home Office, and explain arrangements that has been made in the UK to take care of this adult dependent. It could work, but there is no underlying legal provision to take care of circumstances like that. It is a practical application. जैसा कि आप सुन रहे थे, मेरे कोलीग ये कहते हैं कि यकीन हर केस का एक अपने मेरिट्स होते हैं, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, तो ये उस हवाले से ही देखा जाएगा। मेरे ख्याल में इस केस को सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप किसी मुस्तनद वकील के ज़रिए इस केस को किया जाए। कोई आम बंदा इस केस को नहीं कर सकेगा, तो इसके लिए बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। एक कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? तनवीर बात कर रहा हूँ लेस्टर से। जी तनवीर लेस्टर से, जी बोलिए तनवीर। सर मेरे दोस्त हैं, उनको 16 साल यहाँ हो गए हैं, असाइलम पे है, तो साइन कर रहे हैं कैंटीन, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। तो उनके बारे में क्या कोई बेहतर एडवाइस करते हैं? चांस है, क्या करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा होता है यार, माँ बाप से दूर। वो सिंगल हैं, वो यहाँ पर सिंगल हैं और 16 साल से यहाँ पर हैं और असाइलम पर हैं। ठीक है, साइन कर रहे हैं। साइन कर रहे हैं। कुछ अर्सा, कितने साल पहले साइन किए थे? तो 4 साल से साइन कर रहे हैं। 4 साल से साइन कर रहे हैं। चलें ठीक है, जी हम आपके सवाल को जवाब ज़रूर देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। जी अगले सवाल की कॉल करते पड़ते हैं। In the meantime we received few calls. So someone Muhammad called in relation to Tier 4 General and family. So if someone wants to bring the family on the basis of Tier 4 General, what are the requirements? Yes, Tier 4 General Mohammed, you can bring in family, which is spouse and children. That is been the case in student visas in the past, and that is the case today with Tier 4 visas. Generally, the spouse would be able to work in the UK, and it also depends on the level of studies of Mohammed or the main or the student, because different levels of studies have got different restrictions. So the straight answer is that yes, Mohammed can bring his spouse and children. Funds and how much funds are required? It changes. We're talking of maintenance money to be in the bank account for a given period of time. We have this amount changing from time to time, but it is usually it would be less than £900 that you require in the bank account for a given period of time per dependent that you're bringing into the UK. So if Mohammed wants to know the exact amount for today, then he can contact us later. We'll be able to give him that information. Oh, yes. Now there was another question from Mr. Atif. Let me take this call first. Okay. Assalamu alaikum, कौन साहब कहाँ से? Hello. Hello. Call शायद disconnect हो गई है. Yeah. The question was about extended family member. Okay. For an Italian national. Okay. The gentleman is Mr. Atif. He is an Italian national. Mr. Atif is an Italian. And he is seeking to bring someone of his extended family member. Yeah. Right. Yes. Extended family member
it's possible to bring in an extended family member, but because this person is not a direct family member, to derive the protection, or I should say the cover of the European laws, so it is indirect, so it's got its restrictions. The most important of it is the fact that this extended family member has to be dependent on you, the main, the sponsor, you, the Italian national in this case. So if that dependency is not established, then it would be difficult to get a family permit. What did you mean establishing dependency? Dependency in this case has to do with being part of the household of the sponsor, whether it is here in the UK or abroad in the home country or in another third country. So where that dependency in the sense of being in the same household as the sponsor is not established, then an extended family member application for a family permit would most likely be refused. I mean, household, what exactly household means? Does it mean that you should be living with the sponsor should have been living with that person? There used to be that requirement that the extended family member should be living with, or should have lived with, the sponsor before the sponsor moved to the UK. It's no more the case. You know, case law has changed things. All what you need to establish is, because being a member of the same household requires that the sponsor is usually the head of the household. The extended family member has not established an independent life of his own, an independent family of his own. So he is part of the household. He is part of the cost of running that home. So again, like I said before, it could be here in the UK or it could be abroad, but that dependency has to be established. मैं अपने कुली की बात को मुख्तसर करके पेश करूँगा। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर आना चाहते हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये पहले साबित कर सकें कि वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर उस घर का एक फ़र्द है। यानी कि जो स्पॉन्सर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले ये साबित करें कि वो उस घर के ख़ुद सरबराह हैं, यानी इन मानों में सरबराह हैं कि वो उस घर की देखभाल वो ख़ुद करते हैं, उस घर की कफ़ालत वो ख़ुद कर रहे हैं, यानी पैसे वगैरह वो भेजते हैं, और जिनको वो बुलाना चाह रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर उन्हीं के ऊपर इंहिसार करते हैं, और उस घर के वो भी एक फ़र्द हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप मसलन किसी और घर में रहते हैं और वो किसी और घर में रहते हैं, और चूँकि वो आपके रिश्तेदार हैं और आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर आ जाएँ, तो ऐसा शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। फिर भी हम ये कहेंगे कि हर केस का एक अपने फैक्ट्स होते हैं, उसके अपने मेरिट्स होते हैं। तो अगर आप इस पे मज़ीद कुछ हमसे जानना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. The question is, someone is living in this country for the last 16 years. He's an asylum seeker and he has been signing for the last 4 years, as I could hear. So what are the, what does the law say on this issue? Well, essentially, 16 years doesn't say, doesn't give him any right to reside in the UK under the law directly. Being an asylum seeker, I would expect that either he's still waiting for a decision, which would be unusual given the number of years he's been here, or he has made fresh asylum claims, in the course of being in the UK, not knowing the circumstances of these claims. I will not say anything on that, but having been in the UK for 16 years, he cannot, outside of the asylum system, apply under the immigration system
to stay in the UK, because you need to have stayed in the UK within the rules for 20 years in order to apply to stay here under the immigration rules. If he has stayed for 16 years and he thinks he really has lost ties, we don't know his age, if he has cut off ties, I'm talking of cultural, economic, and social ties with his home country, then he might be able to convince the Home Office within the rules that he has lived in the UK for less than 20 years, but for a substantial number of years, 16 years, and that he has lost ties with his home country, so he qualifies within the rule. That could be an option for him. But again, there is no clear provision on 16 years. जी, जैसे कि आप तनवीर साहब सुन रहे हैं, मैं इसी बात को उर्दू में बयान कर देता हूँ। वो कहना ये चाह रहे हैं कि बज़ाहिर तो कानून यही है कि आपको कम से कम 20 साल गुजारने होंगे, लेकिन चूँकि आपके 16 साल गुजर चुके हैं तो ये भी काफ़ी लंबा अरसा है जो आपने इस मुल्क में गुजारा है। अच्छी बात जो आपने बताई है वो ये है कि आपको 16 साल तो हुए हैं और आप 4 साल से मुसलसल साइन करने भी जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी अलामत है। तो इसमें हमें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अगर आपके अपने मुल्क से कोई अब राब्ता नहीं है, आपकी जो वहाँ फैमिली है उनसे आप बिल्कुल किसी किस्म के राब्ते में नहीं हैं, आपके हर तरह से टाइज़ कनेक्शन जो है वो टूट चुके हैं, तो उस सूरत में ये है कि आप एक फ़्रेश जो है वो क्लेम समझ लें, वो आप डाल सकते हैं। तो चूँकि हमें आपके सारे हालात का सही तरीके से इल्म नहीं है, तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप हमसे या किसी और मुस्तनद वकील से, क्योंकि आप शायद लेस्टर से बात कर रहे थे, तो आप किसी मुस्तनद वकील के पास चले जाएं और उन्हें जाके ये सारी बातें बताएं कि आपके घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा, आपको यकीनन कहीं ना कहीं जाकर कानूनी रसाई हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो यकीनन हो सकता है आपके अगले कुछ साल भी ऐसे ही गुजर जाएं। Qudus, I would like to ask you another question, Okay. which I come across a lot of time, which is nationality and citizenship. Right. So just to give basic requirements for nationality and citizenship, and I would like you to add on penalty points as well, because this is another question we come across. Okay. Well, starting with nationality and citizenship, I mean, to qualify or to naturalize as an adult in the UK, you're expected to have lived in the UK, for 5 years, and that for the past 12 months. Let me take a call. Okay. अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मुझसे बात करनी है। जी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप बोलिए। मैं केस के बारे में पूछना है, फैमिली का केस है, 7 ईयर की बेस पर। आप अगर अपने टीवी का वॉल्यूम अगर बंद कर दें तो हमें आसानी से सुन सकेंगे आप। मैं 7 ईयर की बेस पर केस है फैमिली का। ठीक है। उसके बारे में पूछना है। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? कि फैमिली का केस है, पहले उसका ह्यूमन राइट था, ह्यूमन राइट रिफ्यूज हो गया, फिर उसके 7 ईयर बेस पर अप्लाई किया है। एक बच्ची इधर पैदा हुई है, 7 ईयर हो गई, उसको भी 8 ईयर की है। ठीक है। बाकी 3 बच्चे वो पाकिस्तान से आए हैं, उनको भी 9 ईयर हो गई। ठीक है। 8 ईयर हो गए, 9 ईयर जा रहे हैं। ठीक है। तो उनके बारे में पूछ रहे हैं, उन 7 ईयर के बेस पर अप्लाई किया हुआ है, उसके बारे। तो आप बता रहे हैं कि आपने तो अप्लाई किया हुआ है, फिर तो उसका क्या जवाब आया? फिर अभी तक जवाब नहीं आया कोई। तो आपने किसी वकील के ज़रिए किया है या आप खुद से कर रहे हैं? ना वकील के दिए। तो अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप इंतज़ार करें कि वहाँ से आपको क्या जवाब आता है। ज़ाहिर है अगर आपने एक वकील के ज़रिए किया है तो उन्होंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की होंगी, तो आप इंतज़ार करें और देखें कि उस पर आपको क्या जवाब मिलता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। राइट, सो yeah, we were on the question of nationality. Yes. So as I was saying, adults would be expected to have lived in the UK for at least 5 years, and for the past 12 months would have
had no restrictions on their leave to remain in the UK, which means they would have been on the indefinite leave to remain. Yes, there's criminality requirement, but before I come to that, second part of your question, for children, all children who've lived in the UK for the first 10 years of their life can apply for citizenship as well. And also children who were born in the UK and who were born in the UK while their parents were not permanently resident here. When the parents become permanently resident or permanent resident, these children can also apply for citizenship to be registered. And even children who were born abroad and who have come to the UK where the parents have settled, they too can apply for citizenship, though it will be on the basis of discretion, but that is something that they can do. So that's the general standpoint with regards to residential requirements. Talking about penalty point, to apply for naturalization, you are expected, according to the law, to meet the good character test. Now, it's not about convictions and, custodial sentences and so on, unlike what people think. It's about good character. And good character could be demonstrated even where you have a conviction. Now, they will have to look at the circumstances. If you have one motoring offense and you were convicted, if that's all what you've had, and maybe it was, a long time ago, and given the circumstances, it doesn't really say you are of bad character. And from what we see, you are not refused citizenship as a result of one-off offenses like that. But again, you might not have a conviction, but you may have 50 penalty notices out of court. Now, that might show that you are not of good character. So it has to do with how frequent, how often, what is the character that you have in terms of even antisocial behavior. So minor things that happen, even though you don't get convictions in court, could affect your character when assessing character, good character for nationality purposes. But if someone has got one motoring offense or two, they have to disclose them and explain the circumstances. Chances are it will not bar them from citizenship. जैसा कि आपने सुना, मेरे कुलीग ये कह रहे थे कि इसमें ख़ास तौर पर जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो आपने शायद समझ ली होंगी। मैं थोड़ा सा पेनल्टी पॉइंट्स पर वजाहत कर दूं, क्योंकि ये हमारे सामने सवाल बहुत ज़्यादा आता है। पेनल्टी पॉइंट्स के ऊपर ये है कि अगर तो आपकी कोई जैसे 3 पॉइंट्स आपको लग गए हैं और एक दफ़ा का ये एक वाक़या है, तो फिर तो शायद कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप तवातर से कानून को तोड़ने के आदी हैं और आप कानून की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो एक तरह से आपका बैड करैक्टर एविडेंस बन जाएगा। क्योंकि होम ऑफिस जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं उसमें वो इस सवाल को बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं कि आप गुड करैक्टर के हामिल नहीं हैं, यानी आपका किरदार अच्छा नहीं है। अब इस किरदार को इस्टेब्लिश करने के लिए उनके पास यही होता है कि आप बार बार कानून को तोड़ते हैं। तो एक दफ़ा कोई छोटा मोटा वाक़या हो जाना शायद कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर आप तवातर से ये काम कर रहे हैं, यकीनन फिर वो एक मसला पैदा करेगा। लेकिन फिर वही बात कि हर जो केस होता है उसके अपने फैक्ट्स होते हैं, उसके अपने मेरिट्स होते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप अगर कोई ऐसी बात है तो आप ज़रूर किसी मुस्तनद वकील के पास जाएं और उनसे जाके मशवरा कर लें। और आपका आज का इस प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हाज़िर खिदमत होंगे अगले इतवार इसी वक्त, और अब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।